Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to our channel Online Learning. This video is very important because I received a lot of queries related to the interview results of Accenture. Is there any timeline? And in this video we will discuss about the phase process. If your task is completed but still it is not approved, you are waiting for your interview result. First of all, I have to mention one of the most important point. On the different groups and Telegram groups, I see lot of comments that is related to Accenture result, that they will they will not announce the new result again. Okay, the result date is ended. Okay, so I have to say that this is not decided by us, it is decided by the Accenture team. So don't believe on fake news, okay, because we know the phase process and we know how Accenture team is sending the mail to candidates. Okay, that's why I am saying that they are declaring the result in the form of phases. I know 30 to 40 days is completed but still you not receive the result. So I will say one of the most important point. Okay, so one of the most important point that I have to mention, first related to the interview results. Okay, your interview is good, your examination is good, okay, and still you are waiting for the interview result. Like if your performance is not good, so they are sending the direct rejection mail. Rejection mail is received by many candidates. Okay, the mail and message is received by many candidates. So if your performance is not good, they are sending the direct rejection mail, but still the rejection mail is not received, so there is a chances of selection. Okay, क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो डेफिनेटली वो आपको रिजेक्ट कर सकते थे. दे आर सेंडिंग द रिजेक्शन मेल टू मैनी कैंडिडेट्स, बट if you are waiting for the opportunity, if your exam is good, interview is good, so there is a chances of selection. What I am saying that. Okay, so basically I have to mention one of the most important point. If I talk about Accenture, Infosys, Capgemini, Wipro, TCS, Cognizant, any MNC follow the phase and Candyshare process. Okay, so like not all candidates are from single region. Okay, single region or single phase. So basically according to your Candyshare they are sending the results. Okay, many candidates from 2022 batch previous year, after 8 to 9 months of wait or after 1 year of wait, they are now got the update that is related to their results or their onboarding. Okay, so the process, I know the process is delayed, but the process and all the important point is decided by Accenture team. Okay, so I suggest one of the most important point that will helpful for all of you. Okay, you are waiting for Accenture result. Okay, so that's good. Your exam and interview is good. Definitely you can wait for the particular result. Still apply for the new opportunities. Don't wait for a particular single opportunity. Okay, because in the 2022 year, if like many candidates have only single offer and they are now waiting for the particular onboarding and there is no onboarding from top MNC because of due to recession. So I am suggesting you take you can take the different job, you can take the different job test and apply for different opportunities. If you have a multiple offer, so there is a chances that कि आपको अर्ली ज्वाइनिंग मिल जाए किसी भी कंपनी की तरफ से और आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकें. ओके, so I have to mention this of the most important point, and I have to mention one of the most important point that is related to the पर्टिकुलर प्रोसेस. ओके, सबसे पहले आपका इंटरव्यू रिजल्ट आया, उसके बाद आपका टास्क मेल आया. अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रोसेस ख़त्म हो गई है, आपने टास्क सारे यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं. ओके, सो यू कैन वेट फॉर द पर्टिकुलर टाइमलाइन. ओके, क्योंकि यहाँ पर अब टाइमलाइन चलेगी.
टाइमलाइन आपकी टास्क अप्रूव होने की भी चलेगी और आपका ऑफर लेटर आएगा उसकी भी चलेगी, ओएल की भी चलेगी। क्योंकि देखिए ओएल में एक ही ज्वाइनिंग डेट नहीं है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट ज्वाइनिंग डेट्स दैट इज रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटी। ओके, सो जो ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं ना कि क्या बोलते रिजल्ट नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी काफ़ी डेट्स पे रिजल्ट आया है और रिजल्ट आएगा, बट आई एम सजेस्टिंग यू डोंट अप्लाई फॉर अ सिंगल अपॉर्चुनिटी, अप्लाई फॉर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑन आवर चैनल। हम आपको रेफरल बेस्ड अपॉर्चुनिटी में भी अप्लाई करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बट फेक वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जबकि वो कोई थर्ड पार्टी पोर्टल के बारे में बताते हैं जहाँ से आपको कभी भी कॉल नहीं आने वाला है। तो मैं आप सभी को यही कह रहा हूँ कि आप किसी भी वेरीफाइड जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करें, चेक करें। ओके, एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, हर जगह पे आपकी एक टाइमलाइन सेट है, यू हैव टू वेट फॉर योर पर्टिकुलर टाइमलाइन। ओके, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।